नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप पा रहे हैं, ये कर्नाटका हाई कोर्ट का जो एक फैसला है जिसमें वकील को किया गया था गिरफ्तार और फिर हाई कोर्ट ने जो है 3 लाख रुपया मुआवजा देने का किया है। क्या है ये मैटर, क्या है ये जजमेंट, मैं आप सबके सामने ये लाने वाला हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, बहुत ही केस लॉ इसमें एट लेंथ डिटेल में जो है डिस्कस किया गया है, बहुत ही जो है इसमें फैक्ट्स को अप्रिशिएट किया गया है। तो क्या ये जजमेंट है, मैं ये आपके सामने लाता हूँ थोड़ी देर में ही। और इससे पहले कि मैं ये जजमेंट आप सबके सामने लाऊं, मेरी आपसे रहेगी ये रिक्वेस्ट कि आप काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मुझे फीडबैक दें कि मैं अब जो वीडियो में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट करने जा रहा हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि द बेस्ट कंटेंट और वही जजमेंट जो आपके ऑल टाइम टू कम जो है काम आने वाली, उनको मैं आपके सामने लाऊं। तो आप उसके बारे में मुझे फीडबैक दें और मेरे कंटेंट के बारे में, मेरी वीडियो एडिटिंग के बारे में। और थैंक यू वेरी मच। तो चलिए मैं अब आपको सीधा ले चलता हूँ जजमेंट की तरफ। क्या है वो जजमेंट, तो ये है जजमेंट जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं। इसमें जो है जो रिलीफ मेन क्लेम की गई थी रिट पिटीशन में, वो थी दिस रिट पिटीशन इज फाइल्ड अंडर आर्टिकल 226 एंड 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रेइंग टू डायरेक्शन to the state of Karnataka, respondent number 1 and 3, to register FIR against the respondent number 4 for the offences under the Indian Penal Code and other enactment for indulging in committing wrongful confinement, assault and other offences against the petitioners as detailed in the complaint submitted by the petitioner. और इसमें जो है सबसे पहली जो ऑब्जर्वेशन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने की है वो था, when the state or its agents fear the people, there is liberty. When the people fear the state or its agents, there is tyranny. The petitioner, a young advocate, laments that his personal liberty is torn into smithereens by a few megalomaniac and mayhem-happy police personnel in an act of outrage of his human rights. तो जो बेसिक फैक्ट्स है इसमें वो इस तरह से, द petitioner, a young boy of 23 years, an advocate too young to the bar, having enrolled on 2nd November 2022 to the Karnataka State Bar Council, claimed to be practicing in all courts of the city at Mangaluru. The narration of the story is that the petitioner owns certain agricultural property. It abuts an agricultural property of Mrs. Bhavani and K. Vasanta Goda. Harassment. It is a word that K. Vasanta Goda started obstructing the petitioner of his right to use the road leading to his agricultural property and was attempting to erect a permanent gate with an intention to prevent the petitioner and his family from making use of the road that led to his agricultural property. This constrains the petitioner to approach the court of the principal civil judge and JMFC Bantwal in so and so. The court entertaining the suit grants temporary injunction against K. Vasanta Goda in terms of so and so. The petitioner, after securing certified copy of the temporary injunction order, communicates it to the sub-inspector of police station on 2nd December 22 to take action to protect his property in terms of the interim order so granted by the civil court. It is alleged that there was no action taken by the police. It transpires that the police closed the complaint against the K. Vasanta Goda, holding it to be a land dispute on 2nd December 22. On the same day, immediately after closure of the said complaint, Mrs. Bhavani registers a complaint against the petitioner at so and so on so and so. The crime is registered against the petitioner on the complaint made by Mrs. Bhavani for the offences punishable under section 447 and 379 of the IPC. Therefore, Mrs. Bhavani is the complainant even before the FIR could be registered on her complaint. It is alleged that on 2nd December 2022, the fourth respondent sub-inspector of the police enters the house of the petitioner at 8 p.m. and in spite of resistance of the mother of the petitioner, the police caught hold of the neck of the petitioner, drag him, boot him and take him to the police station and later register the FIR against the petitioner at 8:15 p.m. on the complaint of Mrs. Bhavani so. The incident narrated in the complaint is that the petitioner has attempted to take away the gate that Mrs. Bhavani wanted to erect. Therefore, the offences under section 447 and 379 of IPC were laid on and petitioner in crime number so and so. ये है इसके बेसिक फैक्ट्स है। देन petitioner जो है बेल के लिए अप्लाई किया। After the arrest, the petitioner applies for interim bail before the concerned court. The court records the ill treatment meted out during the arrest of the petitioner by the fourth respondent and assault on the petitioner during the arrest in his house, and also observed that the intimation to be sent to the
authorities to take action against the police officer for violation of personal liberty of the petitioner and grants interim bail. Immediately on release of the petitioner on interim bail, he files a complaint before the police station against the fourth respondent and other officers who have manhandled him. तो ये सारे जो है इसके बेसिक फैक्ट्स है, इनको बहुत जगह पे टाइम एंड अगेन इसमें जो है नोरेट किया गया है इस जजमेंट में, जो कि 56 पेज की जजमेंट है। और इसमें जो बेसिक आर्ग्यूमेंट था पिटिशनर की तरफ से वो था कि जो ऑफेंसेज उसके अगेंस्ट थे वो लेस देन 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट थे, और इसीलिए जो है उसमें जो है अरेस्ट नहीं होना था इन टर्म्स ऑफ द अरनेश कुमार और स्टेट ऑफ बिहार की जो जजमेंट है। और सेक्शन 41A ऑफ CrPC जो है उसका नोटिस नहीं इशू किया है, और जो है यूज ऑफ अनवांटेड फोर्स हुआ है इसमें, और जो है मेड टू राइट कन्फेशन, उसके ऊपर इतना फोर्स और प्रेशर डाला कि उससे कन्फेशन भी ले ली। जो डिफेंस की आर्ग्यूमेंट थी वो थी द पुलिस हैव ओनली परफॉर्म दैट ड्यूटी ऑन सर्टेन ओकेजन्स दो एक्सेप्शनल अरेस्ट कैन बी मेड बाय द पुलिस, दिस वन वाज सच एक्सेप्शन। अब आप बताएं, जैसे ऊपर से फैक्ट्स में लग रहा है कि कोई भी एक कॉमन आदमी भी नहीं कह सकता कि एक्सेप्शनल केस था, पुलिस को अरेस्ट करना चाहिए। Petitioner has himself given a statement that he is guilty of the offense, जो कि एक कन्फेशन रॉन्गफुली ली गई है जो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है। तो जो इसमें अनफर्लिंग ऑफ द फैक्ट्स है, जो ऑनरेबल कोर्ट ने फिर सारी आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद, केस लॉ के बाद फैक्ट्स को जो है इस तरह से नोट किया, जो कि मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ। आई विल नॉट बी रिपीटिंग देम अगेन, लेकिन मैं इनको स्क्रॉल कर लेता हूँ इन केस आप देखना चाहिए तो इसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप इसको देख लें। और जो है कंप्लेंट जो की थी पिटिशनर ने, उसमें जो है ए पेरूजल एट द कंप्लेंट वुड इंडिकेट द एलिगेशन अगेंस्ट द पिटिशनर्स ऑफ टेकिंग अवे द गेट दैट was installed in the property of the complainant, which was also the pathway to the property of the petitioner। और ये बेल ऑर्डर है जो पैरा 11 में ऑब्जर्व किया ऑनरेबल कोर्ट ने। द लर्नर मैजिस्ट्रेट ग्रांट्स इंटरिम बेल टू द पिटिशनर ऑन 3rd December 22। The order granting interim bail recalls the factum of assault by the police on the petition and directs the matter to be referred to the higher authorities for appropriate action against the respondent। और ये जो है ऑर्डर है, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। मैं इसको स्क्रॉल कर लेता हूं आपके लिए। फिर ऑनरेबल कोर्ट ने जो इसमें ऑब्जर्वेशन की है पैरा 16 में, if the case at hand is considered on the bedrock of the principles laid down by the Apex Court in the aforesaid cases, what would unmistakably emerge is the personal liberty of the petitioner is snatched away by the fourth respondent and his cohorts in a brutal manner without even a warrant of arrest or even registration of an FIR. The records would reveal that he has been assaulted and tortured throughout his travel in the jeep and has later been threatened to give evidence against himself, all of which cannot be termed to be grossly illegal and blatantly high-handed. The power of arrest of an accused is misused and abused in the case at hand। इसमें काफी सारा केस लॉ जो है ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट का और बाकी ऑनरेबल कोर्ट्स का जो है इसमें डिस्कस किया गया है। और फिर पैरा 19 में जो है अल्टीमेटली जो ऑनरेबल कोर्ट ने क्या कहा है, the petitioner is an advocate, a responsible officer of any court of law in which he would profess to practice. Being an officer of the court, it is a primary duty of any advocate to assist the court in dispensation of justice. This is the sacrosanct role assigned to an advocate. Notwithstanding the petitioner being an advocate, he is illegally detained and assaulted even after bringing it to the notice of the police that he is an advocate and officer of the court. If an advocate could be treated in the manner of what he has been meted out in the a common man will not be able to bear the burden of such treatment. It is therefore the preparation of illegality and violators of as is laid down by court cannot be left off the hook. They must proceed against both in departmental inquiry to fix accountability and under the criminal law to deter any such iteration as injustice anywhere is a threat to justice everywhere। और ये अल्टीमेटली ये डिसीजन हुआ और ये डायरेक्शन दी गई है, द स्टेट शेल पे कंपनसेशन ऑफ 3 lakhs जो विद इन 2 weeks देना है। और डीजीपी को जो है इसमें डायरेक्शन हुई है कि फोर्थ रिस्पोंडेंट और जो उसके साथ में और थे उन लोगों के खिलाफ जो है एक्शन लिया जाए, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी वगैरह ले ली जाए। और इस तरह से जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो है एक बहुत ही एक अच्छा केस डिसीजन दिया है, एक अच्छा जस्टिस डिस्पेंस किया है। कौन सी है ये जजमेंट, मैं आपको ले चलता हूँ इसका रेफरेंस के लिए। ये जो है
इन दी हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका बेंगलुरु। ये 19 जनवरी 2023 का है, रिसेंट की जजमेंट है बाय द ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एम नागा प्रसन्ना, रिट पटिशन नंबर 2482 ऑफ 2022। और पार्टी का नाम है मिस्टर कुलदीप एडवोकेट वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, और फोर्थ रिस्पोंडेंट जो है उसमें इंस्पेक्टर को भी पार्टी बनाया गया है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है और इसको जो है आपको कर लेना चाहिए नोट, क्योंकि कभी भी आपके पास भी सिचुएशन आ सकती है जब आप इस जजमेंट के बेसिस पे अपना केस कर सकते हैं। तो इसके लिंक को करिए सेव और नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि और मुझे किस पॉइंट पे बनानी चाहिए जजमेंट्स। और इस तरह से थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।